योजना जय श्रीराम। तो जो माने टीजीटी व्यूअर्स रहले तो टीजीटी पिला माने पई बेसिकली टिके स्क्रीन तळु करी देखा सो टीजीटी जो माने रहले तो टीजीटी पिला पई नियत गोटे इंपोर्टेंट वीडियो रहइबो जोद्रे कि हम एमसीक्यू डिस्कशन करबा। तो बेसिकली जो माने टीजीटी प्रिपेयर करछन से माने ताको सिलेबस को नेकरी जहा जहा सब्जेक्ट अछि पर्टिकुलर सी सब्जेक्ट ऊपर ध्यान दियंतु 100% एग्जाम भलो होबो। तो चलो किछरा क्वेश्चन हम डिस्कशन करिया। तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर implantation the finger like projections on the tropoblasts are surrounded by कोन आंसर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन रो क्वेश्चन अछि फर्स्ट स्टेज रे। सेकंड स्टेज रे एनिमल डाइवर्सिटी बा जनरली हम जदी कहबा तो सेज रो क्वेश्चन पाइबो तमे आंसर कोन हबो प्रणाम दीप्ति इट्स मी साईश्री प्रणाम सस्मिता लुबना सुश्री जय श्री कृष्णा कोन आंसर सस्मिता आंसर दियो। आफ्टर implantation the finger like projection on the tropoblasts are surrounded by आंसर कोन हबो फटाफट आंसर दियो। यूटेराइन टिश्यू मैटरनल ब्लड कोन हबो आंसर आकांक्षा रथ सी दैट इज परफेक्ट आंसर कोन हबो सी बढ़िया चलो कोन हबो सी दैट इज यूटेराइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड बढ़िया। अच्छा मते को कि जनरली व्हिच लेयर ऑफ द यूटेरस generally uterus ro co layer is much more important for the implantation which layer of the uterus is important for the implantation who can answer kon answer endometrium lining perfect that is the endometrium lining is a layer of uterus which is important for the implantation or we can say that it provides the surface area for the implantation right। Then next question, to maintain the endometrium lining which hormone is important LH FSH na progesterone which hormone is directly responsible to maintain the endometrium lining during the implantation bele generally को hormone ta directly responsible to maintain the endometrium lining कोन आंसर progesterone perfect समस्त आंसर होची कोन ना progesterone generally and as you know that progesterone hormone is released from corpus luteum तो जनरली corpus luteum is the ruptured graphene follicle that is हमें जानि छे एवरी मंथ रो साइकिल रे ग्राफेन फॉलिकल रप्चर है कि सेकेंडरी ऊ साइट रो रिलीज हुए बा सेकेंडरी ऊ साइट एम्पुला स्टिमस जंक्शन को जाए एंड जो रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल को जनरली हमें corpus luteum बोली कहउचे। corpus luteum रिलीज करे progesterone and that progesterone is important for to maintain the endometrium lining perfect। चलो नेक्स्ट जीवा the structural and the functional unit between the fetus and the maternal blood is known as कोन हबो the structure and the functional unit between the fetus and the maternal blood is known as inner cell tropoblast placenta na chorionic villi एडमिट कार्ड रे जदी इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ अछि एग्जाम दियो तमरो परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ देकरी एग्जाम दियो किछ प्रॉब्लम नै 100% इंदु 5 रे क्लास कराबो श्योर कराबो। द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट बिटवीन द fetus and the maternal blood is known as inner cell trophoblast placenta ना chorionic villi कोन आंसर बी placenta ओके परफेक्ट। हम जानि छे मते कोइ कि जनरली को लेयर टा दैट क्वेश्चन इज which structure is important for the implantation बा हमें कोटा ही implantation हुए मोरुला ना blastocyst which one is directly attached with the endometrium lining and the right answer is blastocyst। जेतोले जनरली blastocyst ता attachment of endometrium lining of the uterus रे जेतोले blastocyst रे हम जानि छे cell arrangement of outer trophoblast and inner cell mass तो जनरली outer trophoblast cell ता directly attachment of endometrium lining सो and inner cell mass जोटा को रहला बा ताको हम embryo blast बोली कहउछे। सो embryo blast बा inner cell mass कोन हुए ना डिफरेंशिएट है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन करे सो दैट एम्ब्रियो फॉर्मिंग सेल को हमें इनर सेल मास बा एम्ब्रियो ब्लास्ट बोली कहउछे। नेक्स्ट जीवा प्लासेंटा डज नॉट परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जनरली को फंक्शन ता प्लासेंटा परफॉर्म करेन समस्त आंसर ब्लास्टोसिस्ट अछि बढ़िया। प्लासेंटा डज नॉट परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कोन आंसर 50 बढ़िया supply oxygen and as you know that supply of nutrients
supply of excretory matters, removal of the carbon dioxide. Placenta does not perform which of the following option? Supply of excretory materials. Generally हमें जानिचे placenta which is a placenta is just like the bridge between the mother and the fetus, and generally bridge देखि केबे भी हेले mother चाहिबोनी कि fetus को excretory materials जाऊ बोली. Placenta रो goal होची to supply the oxygen to the fetus and also to supply the nutrients to the fetus and also to remove the carbon dioxide from the fetus, and the incorrect one is supply of excretory materials. केबे भी हेले excretory material supply होइनी, and समस्त आंसर परफेक्ट बी. ठीक अछि. Placenta is the connected to embryo through umbilical cord, uterine, chorionic na amniocentic. कौन हबो परफेक्ट? The placenta is connected to the embryo through को cord आमे जानि छे, that is answer समस्त कर बी आछि umbilical cord. परफेक्ट, जोटा कि जनरली आफ्टर द बर्थ क्लिप दिया कि कटा हो जाए. वॉइस ऑफ कृष्णा एंड बढ़िया. चलो नेक्स्ट, प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज एन डैश टिश्यू. जनरली प्लासेंटा को हमें को टिश्यू बोली कहउछे. को आंसर कोन हबो? प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज एन डैश टिश्यू. एंडोक्राइन टिश्यू, पैराक्राइन, एक्सोक्राइन ना मेपाक्राइन. आंसर कोन हबो? pancreas. Placenta also act as an endocrine tissue because generally placenta रो भी किछि हार्मोन रिलीज हुए आफ्टर द प्रेगनेंसी बा जते आफ्टर द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लासेंटा टा जनरली एंडोक्राइन भले काम करे, एंड प्लासेंटा रो जनरली रिलीज हुए एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो जनरली these hormones are released from the placenta. So placenta hormone release करूची, so that it is called as endocrine nature. Next बा, which of the following hormone is released by the placenta? Placenta द्वारा को hormone release हुए? HCG, FSH, relaxin, LH. कौन आंसर? बढ़िया अछि. नीतीश, आकांक्षा, लिपिका, लोरा, गायत्री. बढ़िया, that is B. HCG, human chorionic gonadotropin hormone. HCG is released from the placenta. हैला. एंड इनिशियल स्टेज रे जनरली जेतोले इम्प्लांटेशन हुए ने कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग रे जेतोले इम्प्लांटेशन हबो बा ब्लास्टोसिस्ट जेतोले इम्प्लांटेशन हबो, जनरली ब्लास्टोसिस्ट रो आउटर ट्रोपोब्लास्ट सेल अछि एंड इनर सेल मास अछि. सपोज दीज आर द आउटर ट्रोपोब्लास्ट सेल एंड दीज आर द इनर सेल मास. तो जो ट्रोपोब्लास्ट सेल टा अगेन डिवाइड हुए सिंसियोट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट. सिंसियोट्रोपोब्लास्ट एंड आल्सो साइटोट्रोपोब्लास्ट. तो जनरली सिंसियोट्रोपोब्लास्ट कौन करे ना रिलीज करे एचसीजी. तो जो एचसी टा जनरली हम जेतले प्रेगा न्यूज बा आई केयर प्रेगा रे टेस्ट करे तो एचसीजी रो प्रेजेंट कारण ही हमको पॉजिटिव आसे. चलो नेक्स्ट, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, ओविडक्ट. बढ़िया. ओविडक्ट, अदर नेम ऑफ ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब. त्रिदेव, त्रिदेव देखो आंसर तुम त्रिदेव ठीक अछि. मु तुम देखे तुमरो बाकी बहुत सारा पिलांकर देखुची मु सब आंसर देखु. सुश्री, अंकिता, त्रिदेव, वॉइस ऑफ कृष्णा, शुभलक्ष्मी, आकांक्षा एंड अभिस्मिता, नीतीश, नितेश, आशुतोष. चलो सभी तो एग्जाम तुम दे परिबो. रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय कौन हबो? आंसर ओवरी. परफेक्ट. ओवरी. 151 that is ovary. Then how many germinal layers does embryo consist of initially after implantation? केतरा germinal layer consist of initially after implantation? कौन हबो आंसर? 3 layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. Generally 3 layer, ectoderm, mesoderm, endoderm. अच्छा मते को कि एनिमल किंगडम रो तुमको एटी पांचटा क्वेश्चन पचारिबी जेहेतु टीजीटी पिलांकर एनिमल किंगडम रो बहुत सारा क्वेश्चन आसे. तो एनिमल किंगडम रो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन तुम पचरा हबो, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किए शो करियो. को फाइलम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करियो. कमेंट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम भाई, दैट इज
मेटाजेनेसिस को फाइलम शो करिवो मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहार। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेम सेल कहार एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लानेरिया पजेस ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लानेरिया टा कहार एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन एयर ब्लैडर टा कहार एब्सेंट थाए कॉन्ड्रिस्थिस ना ऑस्टिस्थिस। एयर ब्लैडर कहार एब्सेंट। तो कौन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहार। सेलुलर लेवल ऑफ समस्त आंसर ठीक अछि। तो टिके एक्सप्लेन कर दबा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होची पोरिफेरा। मेटाजेनेसिस बा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बा हम जानि छे सिलेंटरेटर दीटा बॉडी फॉर्म देखा जाय आइदर पॉलिप देखा जिवो नले मेडुसा देखा जिवो दीटा बॉडी फॉर्म। बट ओबेलिया गोटे एमिति सिलेंटरेटा बा सिलेंटरेटर एग्जांपल ओबेलिया जे कि दीटा बॉडी फॉर्म शो करे आइदर पॉलिप टू मेडुसा कन्वर्ट हे परिबो असेक्सुअली एंड मेडुसा टू पॉलिप भी कन्वर्ट हे परिबो बाय सेक्सुअली। पॉलिप टू मेडुसा दिस वन इज P फॉर पॉलिप M फॉर मेडुसा। पॉलिप टू मेडुसा asexually A for asexually and medusa to polyp S for sexually. This is called as alternation of generation. So करिवो सिलेंटरेटा। नेक्स्ट ओपन सर्कुलर सिस्टम कार मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा। बट एग्जांपल मोलुस्का मन रखिबो कोटा एक्सेप्शन जे कि ओपन सर्कुलर सिस्टम शो करेनी सेफालोपॉड बा जोटा कि ऑक्टोपस एरिका रहिबे सेतिर सेफालोपॉड टा जनरली मोलुस्का हेबा सत्वे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करिवो नाही। फ्लेम सेल कार एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम जानि छे फ्लेम सेल होची दैट इज प्लैटिहेल्मिंथस बा प्लैटिहेल्मिंथस को हम कहू छे फ्लैट ऑर्म बा डोर्सोवेंट्रल प्लैटेंट बॉडी एंड प्लानेरिया पोजेस ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी। ये प्लैटिहेल्मिंथस एग्जांपल दैट इज एयर ब्लैडर इज एब्सेंट कार कॉन्ड्रिस्थिस। तो जनरली जो कॉन्ड्रिस्थिस रहिला कॉन्ड्रिस्थिस रो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट सो दैट यूज कंटीन्यूअसली स्विम करे फॉर द बुडी जीव काले कंटीन्यूअसली स्विम करे। चलो पढे अछि आउ पांचटा इतर क्वेश्चन तुम पचरिया को एडी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की करथले। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की करथले हंगर एरिया सैटिस्फाइटी सेंटर कोटी थाए फोरब्रेन ना मिड ब्रेन ना हाइंड ब्रेन। देन होची cerebellum is a part of forebrain na midbrain na hindbrain. Cerebellum forebrain na midbrain na hindbrain. Next question that is axine is made up of. Axine is made up of. Second question pollen grain को हमें स्टोर करिया केते डिग्री सेल्सियस रे को आंसर कोन हबो। ओके फर्स्ट आंसर समस्त को बढ़िया आसी। प्रथम आंसर हम जानि छे कोन ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की करथिले RH टेकर करथिले केते मसिया रे करथिले 1969 रे करथिले को बेसिस रे करथिले ना पांचटा बेसिस रे करथिले सेल स्ट्रक्चर मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हैला। सेल स्ट्रक्चर मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देन होची हंगर एरिया भोक लागिया शोष लागिया सैटिस्फैक्शन होबा ये सबुर सेंटर टा कोठी थाए जनरली फोरब्रेन एंड फोरब्रेन रो कोठी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आल्सो दीटा हार्मोन भी सिंथेसाइज करे कोन से दीटा हार्मोन को हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज टू हार्मोन एंड दीस टू हार्मोन्स आर ऑक्सीटोसिन एंड भासोप्रेसिन। सो आंसर होची कोन ना हंगर एरिया सैटिस्फाइटी सेंटर होची हाइपोथैलेमस। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थिला दैट इज cerebellum. Cerebellum is a parts of hindbrain बा cerebellum pons medulla oblongata। cerebellum काम होची बैलेंस मेंटेन करे एंड जेतोला अल्कोहल हम पिए मोस्टली cerebellum रे अफेक्टेड होबे cerebellum टिके डैम टिके वीक हे जाय सो दैट बॉडी रो बैलेंस टा संतुलन हम रक्षा करि पारेनी। देन एक्साइन इज मेड अप ऑफ कोन हमें जानि छे pollen grain रा आउटर लेयर इज एक्साइन एंड द इनर लेयर इज इंटाइन एंड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ sporopollenin and the intine is made up of cellulose and pectin. So pollen grain रो जो एक्साइन रहिला आउटर लेयर रहिला it is made up of sporopollenin important. So sporopollenin टा हाईली एसिड कंडीशन रो भी pollen grain को बचेबो अल्काली कंडीशन रो pollen grain को बचेबो एंड pollen grain रो जो जगह रे sporopollenin टा एब्सेंट है that is called as germ pore बढ़िया अछि and inner layer is intine made up of cellulose and pectin बढ़िया। देन चलो कोन ना pollen grain को केते डिग्री सेल्सियस रे हम स्टोर करिया
पोलन ग्रेन को केते डिग्री सेल्सियस हम स्टोर करि परिया आंसर कोन -196 -195 -94 डिग्री सेल्सियस कोन हो हु कैन से -196 डिग्री सेल्सियस देन मते को कि बायोस्फीयर रिजर्व दिस इज ए इन सिटू कंजर्वेशन ना एक्स सिटू कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व देन को वाइल्ड लाइफ सफारी इन सिटू ना एक्स सिटू देखो हैंड राइटिंग का को टिके प्रॉब्लम होतो सो मु सेति में क्वेश्चन पढी कहूची बायोस्फीयर रिजर्व होची इन सिटू कंजर्वेशन ठीक अछि परफेक्ट बायोस्फीयर रिजर्व हला 14 बायोस्फीयर रिजर्व 90 नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एगोडा होची कोन इन सिटू बट वाइल्ड लाइफ सफारी होची एक्स सिटू स्ट्रिक्टली मन रखियो एटी आउथ लिखि दोची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होची इन सिटू नेचुरल हैबिटेट रे सेमानु तमे रखिबो एक्स सिटू रे कोन दैट इज वाइल्ड लाइफ सफारी ओके देन मते को कि जनरली बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क एमान सब कोन एग्जांपल हो एक्स सिटू होची वाइल्ड लाइफ सफारी लोबना बढ़िया अछि वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सिटू अंकिता इन सिटू वाइल्ड लाइफ सफारी तो जनरली मते को कि बोटानिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क दीज आर एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन परफेक्ट क्रायो प्रिजर्वेशन दीज आर एग्जांपल ऑफ इन सिटू और एक्स सिटू क्रायो प्रिजर्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू और एक्स सिटू नीतिश एक्स सिटू बढ़िया परफेक्ट चलो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की करथले हु कैन से टू किंगडम classification was done by Carlos Linnaeus na R.H. Whittaker na that is Bentham and Hooker kon habo two kingdom classification that is Carlos Linnaeus perfect समस्त को ना Carlos Linnaeus शॉर्टकट रे CL लिखि दोजी that is हमर जो थिला ओके लेट छाड़ो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किए करथिले आंसर दियो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आल्सो कार्लोस लिनियस बढ़िया देन मते को कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को साइंटिस्ट थिले जे कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन करथिले लक्ष्मी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किए आल्सो कार्लोस लिनियस तो टीजीटी पिलांकर ओएसटी रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पचारची ओएसटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या थिला दैट इज ग्लाइकोलिसिस कोठ हुए एट लिखि दोचे टिके ब्लैंक व्हाइट पेस्ट के दरकार चलियो ग्लाइकोलिसिस occurs in cytoplasm ना मैट्रिक्स ना इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हु कैन से थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हैकेल टू किंगडम होची कार्लोस लिनियस थ्री किंगडम हैकेल फोर किंगडम कोपलैंड फाइव किंगडम आरएच व्हिटेकर एंड सिक्स किंगडम दैट इज who can say six kingdom classification किए करथिले six kingdom classification तापर जे ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल रो आगो को कि six kingdom classification को साइंटिस्ट करथिले six kingdom classification कोन हबो कार्ल वुस बढ़िया लिपिका रेडी कार्ल वुस होची six kingdom classification थ्री डोमेन six kingdom करथिले कार्ल वुस ओके ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड तो ग्लाइकोलिसिस कोठ हुए as you know that cytoplasm a large central vacuole present in the cytoplasm and जो large central vacuole टा generally को सेल रे देखा जाए plant cell ना animal cell a large central vacuole present in the cytoplasm it is present in plant cell okay then same time देखिबा क्रेब साइकिल क्रेब साइकिल टा कोठ हुए अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट क्रेब्स सो क्रेब साइकिल जनरली कोठ हुए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कोटा दैट इज द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हम पचरा जीवो दैट इज ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब साइकिल्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जेहेतु क्रेब साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होची सो सेति पई all the enzymes are generally present in the matrix of mitochondria but exception को succinate dehydrate बढ़िया सोनाली ऑलरेडी क्वेश्चन मु कोन पचारि जानि सलानी all the enzymes of
Krebs cycles are present on matrix of mitochondria, but there is a enzyme succinate dehydrogenase. Strictly मन रखो succinate dehydrogenase जो enzyme टा inner membrane of mitochondria देखा जाए हैला मन रखियो. Thank you शिवानी. ओके नेक्स्ट होची कोन ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोड देखा जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बा जहा को हमें अदरवाइज कहूचे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बा हम कहबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोठी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जोटा कि तमरो ओएसटी रे पडितला. सो निहाती चांस अछि ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को नेकी क्वेश्चन पचारिया 100% चांस अछि. ओके ये गला देन मते को कि जनरली ग्लाइकोलिसिस रे केतेटा स्टेप वी कैन से हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस रे केतेटा स्टेप 10 स्टेप. ओके जनरली किए कहि परिबो ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे एटीपी इज यूटिलाइज्ड. ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे एटीपी टा यूटिलाइज्ड हुए को आराम से को स्टेप ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे एटीपी यूटिलाइज हुए. आंसर कोन हबो आसिलानी आंसर समझती करो दैट इज गोटे स्टेप ग्लूकोज रू ग्लूकोज 6 phosphate and another one is fructose 6 to fructose 1,6 20 phosphate. बढ़िया. देन जदि हम क्वेश्चन पचारिबा दैट इज हाउ मेनी NADH H plus release in glycolysis. Glycolysis रे केतेटा NADH H plus release हुए. आंसर कोन हबो हाउ मेनी NADH H plus released in glycolysis केतेटा. आंसर कोन हबो 2. परफेक्ट. दैट इज बीटा NADH H plus release. परफेक्ट. चलो अच्छा एटा आउट लास्ट क्वेश्चन पचारिया रेस्पिरेशन प्रोसेस रे जो एटीपी प्रोडक्शन हुए एटा गोटे स्टेप वाइज प्रोसेस स्टेप वाइज बा मल्टी स्टेप प्रोसेस ना सिंगल स्टेप प्रोसेस. मल्टी स्टेप ना गोटे सिंगल स्टेप बा गोटे हाथुडी आसीबो इमीडिएटली ग्लूकोज को भांगी दबो सब जब एटीपी प्रोडक्शन हिजो. स्टेप वाइज प्रोसेस मल्टी स्टेप प्रोसेस और ए सिंगल स्टेप प्रोसेस कोन बासुतोष स्टेप वाइज बा मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट इज फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस हबो then Krebs cycle for electron transport chain. So step wise हेकरी that is ATP रो production हबो बा till the end रे electron transport chain खत्म हबो. the next को गोटे NADH H plus 1 NADH H plus केतेटा ATP दबो according to NCERT 1 NADH plus केतेटा ATP दबो and 1 FADH2 केतेटा ATP दबो. गोटे NADH H plus केतेटा दबो and 1 FADH2 केतेटा ATP दबो. गोटे NADH H plus टा जनरली 3टा ATP दबो एंड गोटे FADH2 2टा ATP प्रीलिम लेवल रे जेतु NCERT रे मेंशन कराय छि 3टा ATP 2टा NADH नहले एक्चुअली रे दैट इज 2.5 एंड 1.5 बट अकॉर्डिंग टू NCERT दैट इज 3 एंड 2 हला गोटे NADH H plus. परफेक्ट. ओके चलो नेक्स्ट चलो इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हिच लेयर डेवलप्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. चलो से क्वेश्चन रो बाहर एबे चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्वेश्चन बा हमरो कोन सीक्वेंस अछि क्वेश्चन रो. इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हिच लेयर डेवलप्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म भितरे जनरली को लेयर टा प्रेजेंट थाए. त्रिदेव मितु गजल ज्योतिष ज्योत्स्ना रानी आकांक्षा आशुतोष लुबना रश्मि सोनालिका अंकिता पायल पिनाली मायोमेट्रियम ज्योत्स्ना गायत्री शुभम नीतीश अविनाश अनिल. ओके चलो कोन हबो इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हिच लेयर डेवलप्स बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दैट इज मेसोडर्म हैला. आमे जानि छे जेतेबेले गोटे एम्ब्रोटा डेवलप करे तार जनरली 3टा लेयर थाए गोटे होची एक्टोडर्म एंड अनदर वन इज मेसोडर्म एंड अनदर वन इज एंडोडर्म. सो आंसर होची मेसोडर्म हैला. मायोमेट्रियम टर्म कोड अछि जानि पछतो. अच्छा मते कोइ कि जनरली फ्रूट रो कवरिंग कोन व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रूट कवरिंग. फ्रूट कवरिंग कोन ऑप्शन देबी पेरीमेट्रियम ना प्लूरल मेम्ब्रेन ना पेरिकार्डियम.
What is the covering of the fruit? Fruit रो covering होची पेरीमेट्रियम ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना पेरिकार्डियम ना पेरिकार्प कौन हो पेरिकार्प fruit covering is pericarp. Then what is perimetrium? Perimetrium कौन बढ़िया अच्छी ना अंकिता the covering of the fruit wall is pericarp. Perfect. And pericarp is again divided into epicarp, mesocarp and endocarp. मते को कि epicarp, mesocarp and endocarp with which one is edible in mango? Among epicarp, mesocarp and endocarp, which one is edible in mango? Mango रो कोटा होची edible. Mango रो mesocarp is edible. आमे जानि छे mango रो होची ऊपर चोपाटा होची epicarp and fleshy टा होची mesocarp and stony part टा होची endocarp. तो जनरली mesocarp टा होची fleshy and edible. सेमती कोकोनट रो एंडोस्पर्म इज edible. एंडोस्पर्म कोकोनट रो व्हाइट पार्ट कोन कहै जाय सेलुलर एंडोस्पर्म ना फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? The white part of the coconut is called as cellular endosperm or free nuclear endosperm. Liquid fluid inside the fruit. That is the cellular endosperm is the white part and the free nuclear endosperm is the milk. Sorry, free nuclear endosperm is the that is the liquid part and these are the edible. Chalo, in humans the inner cell mass contains certain cells which have the potential to give rise the tissued organ. Generally implantation परे जो blastocyst रो outer टा होची trophoblast cell and inner टा होची inner cell mass. Inner cell mass को हमें otherwise कहूचे embryoblast बोली and ये जो embryoblast बा embryo forming cell or inner cell mass. So say cell माने generally embryo forming करियर capacity थाए. So the capacity to form the embryo from the embryoblast cell जो capacity का हमें को cell बोली कहि परबा stem cell बोली कहि परबा. Answer C is right, perfect. And generally the part of the plant, suppose question सुनो suppose this one is a plant and the part of the plant, suppose this is the leaves of the plant. The part of the plant, the process or the capacity of part of the plant to generate the whole plant is called as गोटे plant रो part जहार capacity अछि whole plant generate करियर से capacity कोन को जाय that is answer कोन हबो totipotency, right? Answer is totipotency. बढ़िया. Next चलो प्लानेरिया टा मन रखिबो ट्रू रिजेनरेशन कैपेसिटी थाए. नेक्स्ट द एवरेज टाइम स्पैन ऑफ ह्यूमन गेस्टेशन बा जो जनरली बेबी रो डेवलपमेंट हुए इनसाइड द यूटेरस तो एवरेज टाइम केते कोन आंसर 9 month. That generally 9 month. Okay. Next the pregnancy phase in human is divided into how many trimester? How many trimester generally गोटे pregnancy phase को divide कराई छी? And the right answer that is as you know that there are 3 trimester. प्रथम trimester होची प्रथम मास, second month, third month. First trimester. Then होची fourth, fifth, sixth month होची second trimester. And 7th, 8th, 9th होची generally third trimester. तो total होची how many trimester? Third trimester. After 1 month of pregnancy, which fetal organ is formed fetus? Generally 1 month of pregnancy बा प्रथम मासरे fetus रो कोन डेवलपमेंट हुए कोन आंसर first month of the pregnancy रे which vital organ is formed? Who vital organ generally formed हुए in the first month of the first month? Which first month रे heart? And everyone's right answer that is heart. Okay. What is the covering of the lungs? Lungs रो covering कोन? The covering of the lungs is pleural membrane. And the covering of the liver is Gleason's capsule, we can say.
ग्लिसन्स कैप्सूल जनरली मते को कि लिवर रिलीज करे बाइल एंड बाइल रो कौन से रोल प्ले अच्छी की बा रोल अच्छी की दैट इज टू कलरिंग ऑफ द स्टूल बा स्टूल रो कलरिंग पाई देयर इज देयर एनी रोल ऑफ बाइल टू कलरिंग आवर स्टूल बाइल रो किछि रोल अछि यस दैट इज बाइल रो पिगमेंट जो रहले बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन these are the essential pigment for the coloring of our stools okay the next question hepatocyte cell present in the liver heart or kidney in which structure or in which organ generally the hepatocyte cell is present liver heart or kidney that is liver okay and generally bile secreted of a liver but store with quality bile is secreted from liver but it will store in Nitish, Ranjita, Jagya, Lipika, Subhalakshmi, Akanksha, Dipti, Preeti, Subhasmita, Satya, gallbladder. That is gallbladder is the storing organ of bile. Evolution route 100% evolution next class रे करिया पक्का कहिलो माने evolution करिया चलो next जीवा ओके अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन जदि क्वेश्चन पचारे इवोल्यूशन जेहेतु पचारले तो हमें कहिया सेम ओरिजिन बा दैट इज मु गोटे सेंटेंस कहबी सेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ना डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रे एग्जांपल दैट इज जदि क्वेश्चन पचारिया फोर लिम्स रो स्ट्रक्चर होची सिमिलर बट फंक्शन होची डिफरेंट फोर लिम्स ऑफ व्हेल बैट चीथ बा जो चित्ता बागर फोर लिम्स व्हेल रो फोर लिम्स एंड बैट रो फोर लिम्स ए समस्त फोर लिम्स जो देखिबा फोर लिम्स माने ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पेल मेटाकार्पेल फालेंज समस्त बोन बा फोर लिम्स हातर जदि बोन रो बा जो बोन रोडा स्ट्रक्चर जो समान हुए एंड समानकर फंक्शन डिफरेंट व्हेल तार फोर लिम्स को यूज करछि फॉर द स्विमिंग डॉल्फिन व्हेल स्विमिंग एंड बैट बा जो बादुडी ताको यूज करछि फॉर द फ्लाइंग एंड हम चित्ता बाग फोर लिम्स यूज करछि फॉर द रनिंग so the structure of the four limbs of different animals are same but the functions are different so these are the examples of divergent evolution next jodi pacharia that is eyes of octopus and mammals and flippers of penguin and dolphins generally flippers of penguin and dolphin ro flippers और penguin ro flippers दी जनकर structure होची different structure but function same सेमती आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स आई थिंक टिके तुम डार्क देखा होतियो जोथि पई करंट पड़ेला सो दैट टिके डार्क देखा होतियो बट आई होप मैनेज करि परिबो सो एया होची कोन ना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो मानकर डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम जदि आईज ऑफ ऑक्टोपस रे आई देखिबा मैमल्स देखिबा तो डी जनकर आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स डी जनकर आईज रो डिफरेंट स्ट्रक्चर बट फंक्शन समान देखिया पई देन कहया that is spontaneous generation theory कौन थिला spontaneous generation theory लुभा ओके थैंक यू टिके मैनेज कर आई थिंक मते स्क्रीन रे देखा होची पूरा ब्लैक देखा होची फोन रे मु देखु सो करंट पड़े टिके ब्लैक देखा होची बट आई होप चलिबो इट्स ओके ओके तो कोन हबो दैट इज spontaneous generation theory जेतोले लाइफ केमिति ओरिजिनेट हला बोली बहुत सारा साइंटिस्ट मान को बहुत सारा थ्योरी हला सेतोले गोटे थ्योरी हला स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी इट मींस लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर बा नॉन लिविंग डिकाइंग मैटर फ्रॉम द अबायोटिक लाइफ अराइज परफेक्ट दैट इज फ्रॉम द नॉन लिविंग डिकाइंग मैटर और अबायोटिक बा थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस लाइफ ता जनरली ओरिजिनेट होची जदी पंख माटी फाटी ए सब रु लाइफ ता ओरिजिनेट हेची ऑटोमेटिकली बट नेक्स्ट को कि जो मिलर कर एक्सपेरिमेंट थिला मिलर जो एक्सपेरिमेंट करथिले जनरली डार्विन कर थ्योरी थिला कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर लाइफ ओरिजिनेट होची बोली ताकू एक्सपेरिमेंट करथिले मिलर कर एक्सपेरिमेंट रे से जनरली अमीनो एसिड नेथिले कोन ग्लाइसिन कोन अमीनो एसिड पाइथिले ग्लाइसिन अलानाइन एंड एस्पेरेटिक एसिड ओके नेक्स्ट मते को कि द यूनिवर्स केते वर्ष तळर 20 बिलियन इयर्स एगो ना 15 बिलियन एगो ना 31 billion years ago universe was 20 billion years ago AGA voice of Krishna alanine glycine and asparatic acid ये तीनटा जिंस पाइथिले होची कोन ना जनरली एसएल मिलर ताकर जो एक्सपेरिमेंट करथिले
बा लाइफ केमिति ओरिजिनेट होची नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर रु तो सी जनरली नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कौन नहीं मिथेन नहीं आमोनिया नहीं हाइड्रोजन नहीं वाटर नहीं मिथेन CH4 आमोनिया NH3 वाटर H2O एंड हाइड्रोजन याकू नेइकिरी से जनरली एक्सपेरिमेंट करथिला एंड एक्सपेरिमेंट रे AGA अमीनो एसिड पाइथिले रिलेटेड यूनिवर्स होची 20 बिलियन इयर्स एगो देन होची हम जे देखिबा लाइफ जनरली यूनिवर्स 20 बिलियन इयर्स एगो लाइफ अपियरेंस केते दैट इज 500 मिलियन इयर्स एगो तीनटा जिंस मन रखिबा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यूनिवर्स होची 20 बिलियन इयर्स एगो अर्थ फॉर्मेशन होची 4.5 बिलियन इयर्स एगो एंड लाइफ अपियरेंस दैट इज 4 बिलियन इयर्स एगो बा अर्थ जेतोले 4.5 बिलियन इयर्स एगो रे अर्थ फॉर्मेशन होची तार 500 मिलियन वर्ष परे लाइफ ओरिजिनेट होची सो हमें स्ट्रिक्टली मन रखिबा यूनिवर्स 20 बिलियन इयर्स एगो अर्थ इज 4.5 बिलियन इयर्स एगो and life appeared that is after the 500 million by 4 billion years ago perfect 3 type voice of krishna बढ़े आज then हमें जो देखिबा that is the human evolution तो human evolution रे हमें जानि छे सीक्वेंस कोन ड्राइपिथेकस रामापिथेकस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस निएंडरथल एंड होमो सापियंस एंड ब्रेन कैपेसिटी अधिका थिला निएंडरथल रो 1400 सीसी आम मानकर ब्रेन कैपेसिटी 1350 सीसी and homo habilis रो 650 cc 650 रो 800 cc and homo erectus that is 900 cc ओके एंड मन रखिया भाई मु तुम कहितली ह्यूमन इवोल्यूशन मन रखिया भाई ड्राइपिथेकस डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया गले हाथ रे धनुतीर धरिले सीधा हेकी ठिया हेले एंड निएंडरथल राक्षस को मारिले डॉक्टर राम ड्राइपिथेकस एंड रामापिथेकस ऑस्ट्रेलिया गले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हाथ रे धरिले होमो हैबिलिस हैंड हाथ रे धरले होमो हैबिलिस सीधा हेकी ठिया हला सीधा बाटा को इरेक्ट तो होमो इरेक्टस राक्षस हो के राक्षस होची निएंडरथल को हम एथि में राक्षस कोची तार ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थिला एंड जॉ गुडा को बहुत बड़ जॉ थिला सो दैट हमें ताको निएंडरथल बोली कहूचे तो निएंडरथल मारला परे होमो सापियंस बा मनुष्य को बचैली ए बडा स्टोरीटा मन रखी ताको मन रखो चलो तो ये रहला ह्यूमन इवोल्यूशन रो तो ब्रेन कैपेसिटी मन रखियो होमो हैबिलिस एंड होमो हैबिलिस रो 650 रो 800 सीसी होमो इरेक्टस रो 900 सीसी ओके ओके नेक्स्ट दिबा in a developing fetus the most of the major organ system are developed by the end of which weeks पूरा डायरेक्टली इनसाइड लाइनिंग गोटे डेवलपिंग फिटस रो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर डेवलप्ड बाय मैक्सिमम ऑर्गन सिस्टम टा को मंथ रे डेवलप हुए एंड द करेक्ट आंसर को वीक रे पचार एंड ऑफ द वीक जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर एंड बेले बा सेकंड ट्राइमेस्टर माने फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रथम 3 मास फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मंथ तारे कोन हो आंसर स्क्रीन रे कटि गला कि सब तुमको वीडियो आसी तो रेस्पॉन्ड करो स्क्रीन आसी तुमको ओके 12 वीक्स चलो ठीक अछि नेक्स्ट बा which of the following is incorrect about the protista protista को नेकी incorrect कोन all are single cell correct देखा होछ ना टिके जूम करिया आई थिंक टिके जूम करले बेटर हो which of the following is incorrect about the protista को नेकी कोटा incorrect all are single cell eukaryotes some have flagella and cilia sexually reproduced by the cell fusion and the zygote formation members of the protista are primarily terrestrial incorrect statement पचारछि कोन हबो आंसर दियो आराम से जोर रे 31 आंसर डी इनकरेक्ट बढ़िया देखो प्रोटिस्टा ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा पूरा स्ट्रिक्टली मन रखो एक्चुअली भुवनेश्वर रे बहुत वर्षा सो दैट वर्षा जो करेंट पळेची एंड होप कि समस्त एरिया रे वर्षा हो गरम रे त्राही मिलु हम मानकू ओके चलो तो ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा प्रत्येक एक कोशी नेस्टी थिबा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम किंगडम प्रोटिस्टा रखा जाय सो परफेक्ट
सम ऑफ फ्लैजेला एंड सिलिया हम जानिचे प्रोटिस्टा को अगेन डिवाइड कराई छि क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लैजेलेट्स यूग्लिनॉइड स्लाइमोड प्रोटोजोन्स सो डाइनोफ्लैजेलेट्स रे दीटा फ्लैजेला अछि यूग्लिनॉइड रे भी फ्लैजेला अछि शॉर्ट एंड लॉन्ग सो निहात रूपे सिलिया एंड फ्लैजेला अछि काहेकि सिलिया जदि हम देखिया को प्रोटिस्टा रे सिलिया अछि हम जानिचे प्रोटिस्टा को डिवाइड कराई छि क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लैजेलेट्स यूग्लिनॉइड स्लाइमोड प्रोटोजोन तो प्रोटोजोन रे जो देखबा अमोइबेड प्रोटोजोन होछि कोन अमोइबा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन होछि ट्राइपोन्सोमा सिलेटेड प्रोटोजोन होछि पैरामीशियम तो सिलेटेड प्रोटोजोन रे सिलिया अछि और सिलेटेड प्रोटोजोन ता अंडर होछि प्रोटिस्टा हेई परिबो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर परफेक्ट बट मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक एटा ही भूल एटा एक्वाटिक हवा कथा हैला तो आंसर होछि कोन डी होछि आंसर नेक्स्ट बा किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड कोन हबो बढ़िया त्रिदेव एंजॉय कर वर्षा को यस सर नयापल्ली रे वर्षा होछि अंकिता यस वर्षाटा हल्ला भलो सत्य बढ़िया चालू नेक्स्ट कोन हबो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड एक्चुअली जदि हम देखिया नि तो बहुत सारा लोक अछन जो माने कि माने तो माने छात घर मुंड गुंजिया पे छात नहीं एंड बहुत सारा स्ट्रगल रहउछथि एंड खरा दिन बेसिकली हम मामा माने कि तमारा मामा जो माने रोसी करछन से माने जानछन एक्चुअली खरा दिन रोसी करी कि दबा केते स्ट्रगल सो नियत रूपे हमें प्रे करिया कि समस्त दैट इज ठीक ठाक रहत एंड वर्षा हो ओके चलो कोन आंसर किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड परफेक्टली क्राइजोफाइट्स इंक्लूड डाइनोफ्लैजेलेट्स यूग्लिनॉइड एंड ऑल ऑफ दिस सो डी होची आंसर व्हिच किंगडम ऑफ व्हीट टेकर आर नॉट वेल डिफाइंड जनरली व्हीट टेकर को कोडा होची नॉट वेल डिफाइंड हैला व्हिच किंगडम ऑफ व्हीट टेकर आर नॉट वेल देखो बढ़िया आंसर एटा प्रोटिस्टा देखो प्रोटिस्टा रा बाउंड्री वेल डिफाइंड हो तमे केबे भी ले कहि परिबोनी प्रोटिस्टा रा जो प्रोटिस्टा रा जो ऑर्गेनिज्म गुडा को सेवने केवल प्रोटिस्टा देखाउछ बोली कहि परिबो नाही द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन सो आरएचटी टेकर कोटा होछ वेल डिफाइंड हो प्रोटिस्टा मन रखियो प्रोटिस्टा मन रे नो प्रोटिस्टा रवि नारायण दैट इज आंसर ऑफ प्रोटिस्टा हैला कहीं ना देखो क्लामाइडोमन्स और कोरेला क्लामाइडोमन्स एंड क्लोरेला ये माने कोन यूनिसेलुलर एल्जी ना नहीं यूनिसेलुलर और एल्जी क्लोरेलाटा हम जानि नै यूनिसेलुलर एल्जी जो रिच फूड सप्लीमेंट यूनिसेलुलर एल्जी माने यूनिसेलुलर एल्जीटा कोन यूकैरियोटिक ऑब्वियसली बैक्टीरियाटा प्रोकैरियोट सब यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर एल्जी माने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को तरह कथा प्रोटिस्टा रहा कथा बट एमान तो एल्जी सो बाउंड्रीज ऑफ द प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड सेमते अमोइबा एंड पैरामीशियम अमोइबा और पैरामीशियम हम देखो अमोइबा पैरामीशियम तो जो देखिबा अमोइबा पैरामीशियम एमानकर बेसिकली जो देखिबा सेलुअल इज एब्सेंट तो सेलुअल एब्सेंट माने को तरह एनिमल रहा दरकार बट एमाने को तरह अछि प्रोटोजोआ अछि किंगडम प्रोटिस्टा अंडर सो आंसर कोन हबो प्रोटिस्टा बढ़िया सर एग्जाम पर पेन पेपर मिलबो कि फिजिक्स प्रॉब्लम है 100% एग्जाम रे तमरो फिजिक्स पेपर पई पेन एंड पेपर मिलिबो एंड ए क्वेश्चन गोटे ओयूटी स्टूडेंट्स पिलांकर नॉट फॉर टीजीटी पिला चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द क्राइजोफाइट्स को नेकी कोटा करेक्ट कोन आंसर क्राइजोफाइट्स को नेकी कोटा करेक्ट हबो फाउंड इन फ्रेश एंड मेराइन वाटर परफेक्ट क्राइजोफाइट्स बोथ फ्रेश एंड मेराइन वाटर सेलुअल एम्बेडेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट परफेक्ट माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन most of them are photosynthetic I think all are correct but all are the option nahi correct about cryophytes found in both fresh marine hobo microscopic plankton ei to paribo most of them are photosynthetic na the cells are embedded with calcium carbonate what have answer IIIV cellules are embedded with calcium carbonate hobo ni ki 34C IIIV na सेल वाला एम्बेडेड इन कैल्शियम कार्बोनेट ओके ठीक अछि तो सी चलो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कोन हो तार आंसर होची तार सी है IIIV कैल्शियम कार्बोनेट होबनी तो नेक्स्ट चलो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन की हम जानि छे डायटम
ओ सॉरी डायटम देइनी डायटम होची एग्जांपल ऑफ क्राइजोफाइट्स तो आंसर कोन हो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन होची क्राइजोफाइट्स क्राइजोफाइट्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ब्लू ग्रेन एल्गी के जनरली को जे कोन ना सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए द बैक्टीरिया व्हिच इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी बा सियानोबैक्टीरिया डाइनोफ्लाजेलेट्स प्रोटिस्ट अंडर रे जहार की दीटा फ्लाजेला थाए एंड डाइनोफ्लाजेलेट्स रो इंपोर्टेंट होची कोन ना गोन्यूलैक्स टा होची कोन ना जनरली समुद्र रेड टाइड फॉर्मेशन करे चलो यूग्लिनाइट होची कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल बट एते परे भी हमर आंसर होची कोटा आंसर होची डी चलो नेक्स्ट जीवा डायटम्स अर्थ इज यूज्ड इन डायटम्स अर्थ इज यूज्ड इन सर मोर फोन बैटरी डाउन हेलानी मोर भी फोन बैटरी डाउन हेलानी 5% तो आंसर कौन हो डायटम्स अर्थ इज यूज्ड इन diatoms as earth is used in for the polishing filtration of oil and syrups all of these and direct line to polishing filtration of oil और syrup बढ़िया ये सब पे diatoms यूज करा जाए cellular forms two thin overlapping cells which is fit together in a soap box कौन आंसर कहार सेलुअल टा माने जनरली गोटे सोप बॉक्स वाला देखा जाए माने साबुन बॉक्स वाला देखा जीवो आंसर होची डायटम आकांक्षा बी बढ़िया अछि मोस्टली मेराइन फोटोसिंथेटिक एंड बाइफ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म मेराइन आ फोटोसिंथेटिक एंड बाइफ्लैजेलेट कोन हो डायटम डेस्मिड डाइनोफ्लाजेलेट्स यूग्लिनोइड कोन आंसर बी डाइनोफ्लाजेलेट्स हो मोस्ट ऑफ द मेराइन एंड बाइफ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म डाइनोफ्लाजेलेट्स ओके मोस्टली मेराइन दिस ना मोस्टली मेराइन रू रिलेट करि परिबो क्राइजोफाइट्स होची बोथ फ्रेश और मेराइन डाइनोफ्लाजेलेट्स होची मेराइन यूग्लिनोइड होची फ्रेश तो बी द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू यूग्लिनोइड फोटोसिंथेसिस करि परिबो बट आंसर मोस्टली फोटोसिंथेसिस डाइनोफ्लाजेलेट्स भी होबो द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू appear yellow green brown blue red depending on the pigment of cell steep cellulosic plate form cellular ना one longitudinal and one transverse flagella photosynthetic ना diatom desmid ना endophase कौन होगा आंसर दियो संजुला ओके कौन होगा आंसर steep cellulosic plate one longitudinal 8 रिलेट करि परबो कहार फ्लैजेलेटा one longitudinal one transverse ए गोटे लाइन रो रिलेट करियो डाइनोफ्लाजेलेट्स काहे कि ना डाइनोफ्लाजेलेट्स रो दीटा फ्लैजेला यूग्लिनोइड रो भी दीटा फ्लैजेला बट को लाइन रो तमे देखिबो कि डाइनोफ्लाजेलेट्स विषय पचारछि बोली काहे कि ना डाइनोफ्लाजेलेट्स रो जो फ्लैजेलेटा अछि गोटे होछि लॉन्गिट्यूडिनल आ गोटे ट्रांसवर्स किंतु यूग्लिनोइड रो जो फ्लैजेलेटा अछि गोटे होछि लॉन्ग आ गोटे होछि शॉर्ट तो लॉन्ग आ शॉर्ट फ्लैजेला थिले तमे यूग्लिनोइड मारिबो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स थिले फ्लैजेला थिले डाइनोफ्लाजेलेट्स मारिबो रेड टाइट ऑलरेडी मु तो कहली समुद्र रा कलर को पूरा रेड कर दबो कोटा दैट इज गोनालैक्स तो आंसर कोन हबो गोनालैक्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गोनालैक्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइनोफ्लाजेलेट्स तो आंसर कोन हबो एटा गोटे डाइनोफ्लाजेलेट्स जे कि समुद्र रो कलर को रेड टाइड करे आ ई रेड टाइड रे भी टॉक्सिन थाए जोटा कि फिश माने को मोर्टालिटी रे बा फिश मारिया रे भी कॉज फिश मरिया रे गोटे कॉज करे नेक्स्ट बा हैबिटेट ऑफ यूग्लिनोइड रा हैबिटेट कोठी क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लाजेलेट्स यूग्लिनोइड हैबिटेट यूग्लिनोइड होजी फ्रेश वाटर फ्रेश रिवर वाटर फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर ना मेराइन वाटर ना ऑल ऑफ दिस कोन होबो फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर होते एटा पडिबोनी क्वेश्चन हो फ्रेश हैबिटेट ऑफ यूग्लिनोइड फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर ना ऑल ऑफ दिस हे हो ऑल ऑफ दिस भी हेई परियो मो यूग्लिनोइड सब जारे बंची परियो ऑल ऑफ दिस मार मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिनोइड रो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोन काहे कि ना यूग्लिनोइड को कहआ जाय कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल यूग्लिनोइड को जनरली कहआ जाय कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल connecting link
between plant and animal. So generally ये होची कोन होते हेटेरोट्रोपिक ना ऑटोट्रोपिक ना सिम्बायोटिक ना मिक्सोट्रोपिक जेहेतु प्लांट एंड एनिमल रो बिहेवियर शो करिवो बा फोटोसिंथेटिक हेई परिवो एंड नॉन फोटोसिंथेटिक हेई परिवो सो दैट हम कोन कहि परिया ना आकु हम जनरली कहि परिया मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिनॉइड होची मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्ट्रिक्टली मन रखिया अछि चलो नेक्स्ट दिबा सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग कोन होबो पेट्रोमाइजन माइजिन काकाडोन ट्राइगन आंसर कोन होबो ठीक चार्ट पेट्रोमाइजन लाम्प्रे माइजिन हैगफिश काकाडोन ग्रेट व्हाइट शार्क ट्राइगन टॉर्पेड ओ करेक्ट मैचिंग पचेछि ना ठीक अछि बोले करेक्ट ओ सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग पेट्रोमाइजन लाम्प्रे हवा कथा माइजिन हैगफिश हवा कथा काकाडोन ग्रेट व्हाइट शार्क ताले गोटी ही आंसर हो सी होउची एटा हो ताले ट्राइगन तो ट्राइगन रहउची दैट इज जो पॉइजनस स्टिंग थाए जब मारियो माने पूरा हेवी पॉइजन हबो टॉर्पेड रहउची इलेक्ट्रिक ऑर्गन थाए 220 वोल्ट रो इलेक्ट्रिक वोल्ट मारी परिबो गोटे लोक पागल भी जो इलेक्ट्रिक वोल्ट मारले सो आंसर होची ग्रेट व्हाइट शार्क लिपिका त्रिदेव अंकिता रितीश पायल भयसव कृष्णा पायल लोभा रितेश ओके जाहो तुम एते समय रहिलानी एत तो बहुत वर्षा भी हे गलानी ना बहुत जोर से वर्षा भी हेलानी चलो स्ट्रीमलाइन बॉडी तो एई जो तुमरे एंड करिया तो ये रहला तुम पय होमवर्क रहइबो 179 सो बेसिकली तुम पय होमवर्क रहो देखा हेउ चला कोन विथ अपरकुलम अछि माने एटी तुम रिलेट करबेरो होमवर्क ये होची होमवर्क तो निहाती जो पिला देखुचो तो ट्राई करो होमवर्क करो क्वेश्चन आंसर दबा पई एंड इजी क्वेश्चन अछि जोटा कि तुम देखिले भी आंसर तुम आसीबो एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि तुम लास्ट मोमेंट पर तो देखुचो वीडियो को एंड श्योर तुम डेली बेसिस रे प्रैक्टिस करो टीजीटी रो जो कोर्स रहिला दैट इज तुम मानकर एनिमल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी रो जेमति कि रहिला एक्सक्रीशन सर्कुलेशन ब्रीदिंग एंड आल्सो दैट इज फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन ये सब को जनरली भल से पढ़ो एंड 100% दैट इज जहां भी गोल अछि अचीव करो एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जय जगन्नाथ पायल 181 182 देखा जाउनी गोटे सेकंड प्लीज ओके 181 एंड 182 बबुल थैंक यू शिव प्रसाद थैंक यू ओके ई क्वेश्चन तुम रहिला बाकी आंसर दियो हला आको आंसर दियाओ किछरा क्वेश्चन रहि गला मो स्क्रॉल कर दोची बाकी से क्वेश्चन जे तुम कर दबो पॉज करिकी ए क्वेश्चन उडा टिके रहि गला ए क्वेश्चन आंसर दबो जो मान देखो जो वीडियो को पॉज करके आंसर दबो ट्राई करिवो सब न देले निजे निजे प्रैक्टिस करो दैट इज टिके पॉज करके वीडियो को देखि सॉल्यूशन बाहर कर दो हला रहि गले क्वेश्चन रा वर्षा जुगु ओके ठीक अछि चलो ओके थैंक यू